Welcome to the Hope.Wafaq online for everyone. Course we offer worksheet making, arts and craft course, graphics designs, class management, basic research in English, basic research in Urdu, demo class Urdu, demo class preparation in English, class in charge in English, class in charge Urdu medium, vice principal Urdu medium, vice principal English medium, coordinators. Even a single person can enroll face-to-face classes. वन-on-वन इंटरफेस अकेला फ़र्द भी दाखिला ले सकता है. मुकम्मल तवज्जो, इनफरादी ख़ासियात, आपकी खुद एतमादी और भरोसामंदी की अज़हद गारंटी. वी गारंटीड फॉर योर ट्रस्ट एंड वैल्यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेलकम बैक फ्रॉम मेंटोर इंग्लिश. Professor MA-Raza from Mentor English. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor MA-Raza. Today we are going to start the on-demand lecture of East English Syllabus class 4th or grade 4th, page number 4th. So let's do it. Let's get started. Question making. Before going to start, I would like to I will definitely give you the Urdu version of this lecture at the end, but first I'm going to discuss it in particular English for the teacher who are working in a particular English medium. So the question making, the topic particularly tells us make some tricky questions. Tricky mean there would be a very easy answer, but a very intellectual person would unable to answer the question right on the time. So these particular questions are called tricky questions. Make some tricky questions from the poem and ask your classmates to answer them. So how we make them, or how we try to create them, let me just give you some examples from the poem. For example, you are going to discuss for example, if I were a parrot and I would like to eat a carrot. So you can trick it. For example, if I were a parrot, I would take a cart. So that would be tricked, because because parrot cannot parrot khincha take a cart, or cannot take a cart. So I used in spoken I used can't into cannot into khincha. Okay, and same as for example, many pranksters on YouTube, they usually prank with these tricky questions. So if you read or if you watch some type of one or two videos about that, you will definitely handle the idea, inshallah. Particularly grammar, conjunction, that is a particular word that basically conjunction correlate or combine or connect two sentences with a particular reason. So they are called conjunctions. Circle the conjunction. For example, in first sentence, Sarah made a cake and biscuits for her birthday party. So and is here conjunction. In sentence 2, Umar always win the race because he is very fast, or cause he is very fast. So because here is particularly a conjunction. In sentence 3,
I can play badminton, but I cannot play football. I can't play football. So, but is here a conjunction in sentence 4. It was raining outside, so I took my umbrella. It was raining outside, so I took my umbrella. Question number 5. I need fruits, vegetables, milk, eggs, and bread from the store. And here is a conjunction, eggs and bread, and is here a conjunction in sentence number 6. I don't have much time, so hurry up. I don't have much time, so hurry up. I don't have much time, so hurry up. So so is a conjunction in this particular sentence. So the next is verbs. Verbs are silent, a little bit silent, and the word will be verb. Circle the verbs. Question number 1. We are going to sleep early tonight. We are going to sleep early tonight. We are going to sleep early tonight. So sleep is the verb. They will do their work tomorrow. Do is a basic verb or main verb, and work is here object, but work is also used as a verb. So why it was circled. So the next is question number 4. I drank 3 glasses of water as I was very thirsty. So thirst is also used as a verb, but here main verb is drank. The first form of drank is drink. So in question number 5, Hiba and the brother climbed the mountain in 2 hours. So climb the mountain. What is it? Okay. Spoken English language trainings. Oh, it would be by me. Okay. Here is. Let me just take a picture. Yes. Here is okay. No, there is just a minute. I want to take check it. Yes, okay. आप कॉल ले लें इतनी देर में. जी सर. सर मैं आ गया. मैं तो यार रजा साहब ने कराना वैसे. जी okay. Thank you very much. So here we are talking particularly about question number 5. Hiba and her brother climbed the mountain in 2 hours. So climbed here is particular verb. And question number point number 6. Rahil was hit by a car on the road. So hit is main verb. 7. Amara loves to read horror stories. So love is here a main verb, and in sentence number 8, I like to sit by the beach and watch the sunset. So sit and watch both are verb here. So the page number 4 is completed. Now let's do it in Urdu, the same sequence and the same situation. तो जनाब मेरे प्यारे जो है वो साथी इकराम और डियर वाचर्स, डियर सब्सक्राइबर, क्वेश्चन मेकिंग्स को सबसे पहले जो है ना वो ले लेते हैं, और क्वेश्चन मेकिंग को जो है ना वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप आम जो है ना यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि वो जो है ना वो उर्दू पॉइंट में और दीगर जो है ना वो शामी और दीगर किस्म के लोग जो है उसके पता है वो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और उनके आंसर बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन वो ऐसा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन बनाते हैं कि उससे जो है वो बड़ा वो अजीब सा लगता है।
तो इसके अंदर जो है ना ये बताया गया है। वैसे मैं जो है ना इसके ट्रिकी क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्द इसको जो है ना वो अलग से आपको जो है वो दे दूंगा, चूँकि ये एक पर्टिकुलर जो है वो ट्रेनिंग सेशन मांगता है। तो इसके अंदर जो है ना वो यही चीज़ है ख़ास तौर पे कि ट्रिक हो उसके अंदर, और फिर लोग जो है ना बच्चे उसको आसानी से जो है वो उस तक ना पहुंच सके। तो ट्रिक का मेन मकसद ये होता है कि वो ट्रिकी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा देर तक जो है वो याद रहती हैं। इसके बाद है जी ग्रामर। ग्रामर में कंजंक्शन है। कंजंक्शन का सादा सा जो है ना वो आप याद रख लीजिए डियर टीचर्स, ख़ास तौर पे, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को होमवर्क खुद करवाते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है बुनियादी तौर पे एक ऐसा आंकड़ा कि जिसके ज़रिए आप दो पटड़ियों को जोड़ सकें, ठीक है, तो या दो जो है ना वो चीज़ों को आप जोड़ सकें, तो उसके लिए कंजंक्शन। लेकिन जब हम उसको लेके आते हैं वर्ब के अंदर, आपने देखा होगा ये जिन्होंने ट्रेन पे सफ़र किया हुआ है, तो वो जो है ना वो कोटरी जंक्शन, रोटरी जंक्शन, उसके बाद लाहौर जंक्शन, उसके बाद जो है वो मलकवाल जंक्शन, ठीक है, तो ये आपने सुन रखे होंगे। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे वो एक ट्रेन को जो है वो दूसरी पटड़ी पर ले जाने के लिए वो बनाए होते हैं, तो वो दरमियान में जो है ना वो जंक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी इनका काम कुछ ऐसा ही है कि लैंग्वेज के अंदर जो है वो जंक्शन क्या काम करता है कि दो सेंटेंसेस को आपस में कोरिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लेके आते हैं। तो मैं जल्दी से ये बोलता जाता हूँ, आप नोट करते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो एंड है, यानी जो दूसरे जुमले के अंदर जो है वो बीकाज है, तीसरे जुमले के अंदर बट है, चौथे जुमले के अंदर जो है वो सो है, पाँचवें जुमले के अंदर एंड है, छठे जुमले के अंदर जो है वो फिर सो है। और इसी को आप अगर जो है वो दोबारा से करना चाहें तो 2-3 मरतबा दोबारा सुन लीजिए रिवाइंड करके, तो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ याद हो जाएगा। और इंग्लिश में कैसे बताना है उसके लिए आपको पीछे जो है ना वो इंग्लिश वाला लेक्चर फिर ये आपको सारा सुनना पड़ेगा, और फिर आपको ये तफसील से समझ आ जाएगा। उसके बाद वर्ब है। वर्ब का मैंने उर्दू में आपको बता रखा है कि फ़ेल होता है, फ़े आइन लाम। जिसको लिखना नहीं आ रहा, फ़े आइन और लाम इकट्ठा लिखेंगे तो आप उसको जो है वो समझ जाएंगे। तो यहाँ से हमने जो है ना वो निकालने हैं, सिर्फ वर्ब को हमने निकालना है। नंबर 1 जो है वो स्लीप है। और मैं अभी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो दौरान लेक्चर जो है ना वो मेरे जो है ना एक मुअज़्ज़ज़ क्लास 4 जो है ना वो तशरीफ़ लाए। वो डायरेक्टर साहब का जो है वो कुछ साइंस वगैरह लेने के लिए आए थे, उन्होंने एक सर्कुलर भेजा, तो उस दौरान जो है वो मुझे थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ा। तो अब ये जो है चूँकि आपको जल्दी लेक्चर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्दी अपलोड हो जाए। तो फिर वो बीच में जो मुखिल हुए हैं तो वो मुझे भी जो है ना वो माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद था कि आप तक जो है वो लेक्चर अच्छे हालत में पहुँचे। तो चलिए, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो बीच में आए तो उस जगह पे आप परेशान ना हो जाएं कि ये हुआ क्या था, ठीक है जी। तो उसके बाद है हमने कर लिया था डू और नीचे सर्कल द वर्ब्स। जी अब हमने वर्ब निकालने हैं। तो पहले जो है ना वो सेंटेंस के अंदर स्लीप जो है वो वर्ब है, दूसरे के अंदर डू, और वर्क के गिर्द भी जो है ना वो दायरा लगा हुआ है। वर्क के गिर्द दायरा इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर जो है वो वर्ब डू है मेन वर्ब के तौर पे, लेकिन वर्क भी जो है ना वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए दायरा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद जो है वो तीसरे जो है सेंटेंस के अंदर प्लेड है, यानी ये वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म बनी हुई है। चौथे के अंदर ड्रैंक और थ्रस्टी। अब थ्रस्ट बजाते ख़ुद भी जो है ना वो इसके तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना मेन वर्ब आपका कौन सा बनेगा, ड्रैंक। तो ऐसा ना हो कि जल्दी से आप उधर से लिख कर ले जाएं और लेक्चर आपने सुना ना हुआ हो। तो ये यहाँ पे ट्रिकी खुद ब खुद आ गया है कि आप थर्स्टी अगर जो है ना ऊपर से देख के लिख लेंगे तो फिर लेक्चर नहीं सुनेंगे, तो फिर आपके साथ यही हाल होना है। तो ड्रैंक यहाँ पे मेन वर्ब है। हिबा एंड हर ब्रदर क्लिम्ड, यहाँ पर क्लिम जो है वो आपका मेन वर्ब है, ठीक है। राहिला वाज हिट, हिट यहाँ पर जो है ना वो मेन वर्ब है। इसी तरह अम्मारा लव्स, लव्स यहाँ पर जो है ना वो मेन वर्ब है। और 8वें के अंदर जो है वो 2 वर्ब हैं। तो बाकायदा जो है ना वो आई लाइक टू सिट बाय द बीच, और यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन एंड इस्तेमाल होकर आगे दूसरा जुमला है, तो इस वजह से एंड वॉच द सनसेट, ठीक है। तो वॉच और सिट दोनों जो है ना यहाँ पर मेन वर्ब है, दोनों ही मेन वर्ब हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो है ना वो लेकिन 4 क्लास के बच्चे हैं, तो अगर आप इनमें से कोई एक भी बता दें, जो हमेशा याद रखिए कि 2 इकट्ठे हो जाएं तो पहला वर्ब जो है वो पहले बताते होते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो ये था हमारा सफ़ा नंबर 4 मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर अब कोई भी जो है ना वो नहीं है टीचिंग मेथडोलॉजी या कोई जो है ना वो फॉर टीचर्स ओनली, तो इजाज़त दीजिए।
ईस्ट सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह उसके लेक्चर्स जो है ना वो आपको मिलना शुरू हो गए। तो मैंने पहले भी गुजारिश कई मरतबा की है कि इसके साथ साथ अब अगर जो है ना वो लॉरल जो है वो इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर्स और आफाक के लेक्चर्स को सुन लेते हैं तो आपकी अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी और आपकी अपनी टीचिंग पैडागोजी और टीचिंग इंट्रिकेसी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल जो है मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर MA-Raza, ये इंग्लिश की सर्विसेज के लिए। इसके अलावा हमारा उर्दू चैनल जो है वो मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर MA-Raza है, और इसके साथ साथ इस्लामिक या दीनियात के लिए या इस्लामिक क्लासिकल इस्लामिक साइंसेस के लिए, और जो है वो मंतिक और फ़लसफ़ा के लिए हमारा चैनल है जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।